Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, that is the co-translational and post-translational modifications of protein. So today we are going to discuss about this topic, that is co-translation and post-translational modification of protein. So in this topic, we are going to discuss about the co-translational modifications. So what type of modification happen to the protein while during protein synthesis is going on, and the second, after the completion of protein synthesis, what type of modification we got to see in that particular protein. So these are called the co-translational and post-translational modifications. So there are very important reasons for the modifications, so that the proteins can be transferred to their particular destination and they can be folded properly. So that's why the protein fold are there are some modification in the protein. So we will discuss one by one. So first of all, and mainly this translational modification is about in the endoplasmic reticulum, because there are different post-translational modification in cytosol, also in the Golgi complexes. So we are only going to discuss the translational modification in the endoplasmic reticulum. So in the endoplasmic reticulum, or in the, we have seen the protein synthesized by ribosome associate with the membrane of rough endoplasmic reticulum, enter into the lumen of the endoplasmic एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो हमने देखा कि कैसे जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो ट्रांसलेशनली, को ट्रांसलेशनली और पोस्ट ट्रांसलेशनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में एंटर होता है. ठीक है, हमने देखा वहाँ पे कुछ ट्रांसलोकोन्स थे और कुछ प्रोटीन्स थे, जैसे कि BIP 661. तो वो किस तरीके से उन प्रोटीन्स को लेके आता है, टारगेट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है. सो इन द ल्यूमन ऑफ द रेड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 5 principal modifications of protein occur before they reach their final डेस्टिनेशन. ठीक है, तो फाइनल डेस्टिनेशंस में पहुंचने से पहले उनके कुछ मॉडिफिकेशंस रहते हैं, जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन. ठीक है, दैट इज़ द एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, और disulfide bond formation, then proper folding, then specific proteolytic cleavage and assembly into multimeric protein. Okay, so first of all, the glycosylation process occur. ठीक है, तो glycosylation process is the addition of sugar molecule or carbohydrate molecule on the nascent protein. So this is a type of co-translational modification. Then there is sulfite bond formation. So there are some proteins in which sulfite bonds are formed, mainly between the cysteine residues. तो सिस्टीन जो अमीनो एसिड है, तो वो वही एक सिंगल अमीनो एसिड है जो सल्फर बॉन्ड्स फॉर्म करता है. सो इन सिस्टीन रेजिड्यू देयर इज़ बॉन्ड फॉर्मेशन. तो नॉर्मली जो प्रोटीन्स रहते हैं उनमें सल्फर बॉन्ड्स तो होते हैं, बट दे आर नॉट करेक्टली फॉर्म्ड. सो यहाँ पे क्या होता है, वो सिस्टीन जो सल्फर बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं पहले, वो ब्रेक होते हैं. ठीक है, उसके बाद जो क्लोजली एसोसिएटेड सिस्टीन्स होंगे उनके बीच में सल्फर बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. दैट इज़ द ब्रेकेज ऑफ सल्फर बॉन्ड्स विच आर वेरी फार. एंड हम ऐसा बोल सकते हैं इनकरेक्ट जो सल्फर बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं सिस्टीन के बीच में, तो वो ब्रेक हो जाते हैं. और जो
एक प्रॉपर सिस्टीन के बीच में जो सल्फर बॉन्ड है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है कि। तो दिस इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। देन जो थर्ड प्रोसेस है, इट इज़ द फोल्डिंग, प्रॉपर फोल्डिंग। सो एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, कुछ जो प्रोटीन्स है, जो मेनली प्रोटीन्स है, उनका क्या होता है, प्रॉपरली फोल्डिंग होता है, और जो प्रॉपरली फोल्ड नहीं होते हैं उनका प्रोटीलिटिक क्लीवेज हो जाता है। देन वैसे ही मल्टीमेरिक जो प्रोटीन्स है, जैसे कि हम इंसुलिन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो प्रो इंसुलिन है वो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पे फिर से जो प्रॉपर सल्फ़र बॉन्ड्स है वो फॉर्म होते हैं। या इम्यूनोग्लोबिन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे सल्फ़र बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से ये जो कुछ को ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, जो ये ग्लाइकोसाइलेशन है और ये जो प्रोटीन फोल्डिंग है, वो को ट्रांसलेशनली होता है। मेनली जो ग्लाइकोसाइलेशन है, अगर हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वहाँ पे एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है मेनली। किस पे, जो एस्पार्जिन अमीनो एसिड है वहाँ पे जो ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज हैं, ठीक है, वो ऐड हो जाता है, जिसको हम ग्लाइकेन बोलते हैं। ओके, और फोल्डिंग में भी एक को ट्रांसलेशनल, एक पोस्ट ट्रांसलेशनल है, ठीक है। तो को ट्रांसलेशनल में वहाँ पे बीआईपी जो प्रोटीन है वो पार्टिसिपेट करता है, और जो पोस्ट ट्रांसलेशनल फोल्डिंग है वहाँ पे कालनेक्सिन और कैलरेटिक्यूलिन जो प्रोटीन्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, जो को ट्रांसलेशनली होता है किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो सबसे पहले हमारा है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ proteins. Okay, so this N-linked glycosylation is the attachment of a sugar molecule, mainly glycan, to a nitrogen atom in an amino acid residue, mainly जो एस्पार्जिन है, ठीक है। तो वहाँ पे वो ऐड होता है किस पे, मेनली एस्पार्जिन रेजिड्यू से, उस पे residue in a protein. So attachment of a sugar molecule, mainly we call that sugar molecule, that is glycan, which consists of 7 mannose residue, then 2 glucose amine or galactose amine, N-acetyl glucose amine or galactose amine, and 3 glucose residue. So when these sugar molecules, which we called glycan, is added to an amino acid, nitrogen atom of an amino acid, mainly the asparagine amino acid, so that process is called N-linked glycosylation, and this process is a co-translational modification of the protein, in which the protein is modified into glycoprotein. So in the ER, in rough endoplasmic reticulum, this process involves the addition of a large preformed oligosaccharide precursor to a प्रोटीन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक लार्ज
प्री फॉर्म जो पहले से बना हुआ है वो ओलिगोसेकेराइड उस अमीनो एसिड के नाइट्रोजन एटम पे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा ग्लाइकन है वो ऑलरेडी वहाँ पे फॉर्म्ड होता है। ठीक है, देन उस ग्लाइकन को दैट इज कंसिस्ट ऑफ 7 मेनोज 2 ग्लूको एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और गलेक्टोजामीन एंड 3 ग्लूकोज रेजिड्यू जो ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ होता है, दैट इज ट्रांसफर्ड टू द protein and the protein is modified into glycoprotein. So this precursor oligosaccharide is linked by a pyrophosphoryl residue to dolicol, a long chain uh, polyisoprenoid lipid that is firmly embedded in the rough endoplasmic reticulum membrane. तो जो हमारा ये ग्लाइकन है, it is attached to a lipid that is iso polyisoprenoid lipid which is firmly attached or embedded in the rough endoplasmic reticulum membrane. ठीक है, इस पे हमारा जो ये ग्लाइकन रेजिड्यू है वो ऐड होता है, देन इट इज ट्रांसफर्ड टू आवर प्रोटीन। दिस इज, तो जो हमारा प्रोटीन है वहाँ के जो एस्पार्टेट है वहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, सो द ओलिगोसेकेराइड donor is the polyisoprenoid lipid which is called dolicol. Okay, so this dolicol is a fatty acid or lipid which consists of 75 to 95 carbon atoms. So it's a polyisoprenoid lipid which consists of 75 to 95 carbon atoms. So this is the donor of the this preformed oligosaccharide. So the structure of N-linked oligosaccharide is same in animals, and single-celled eukaryotes. So that structure of this particular oligosaccharide is similar. सब में सेम है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या सिंगल सेल जो यूकैरियोट्स है। ठीक है, तो उनमें सब सेम है, दैट इज इट कंटेन्स अ 3 ग्लूकोज 9 मेनोज एंड 2 एन एसिटाइल ग्लूकोज amine molecule which is written as like this 3 menos 9 and glucose amine and acetyl glucose amine. So 9 molecules of mannose, 3 molecules of glucose and 2 molecules of N-acetyl glucose amine. So before adding this oligosaccharide to the particular amino acid of the protein, the oligosaccharide will be formed. ठीक है, तो पहले ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे ये जो डोलिकोल है उस पे जो पॉलीसेकेराइड है वो ऐड होता है। ठीक है, पहले वो फॉर्म होते हैं वहाँ पे, उसके बाद इस डोलिकोल से वो ट्रांसफ़र होता है इस प्रोटीन के पास। ठीक है, उस प्रोटीन के जो एस्पार्जिन है उस अमीनो एसिड के पास। ठीक है, तो हम देखेंगे वो होता कैसे है। तो पहले इस डोलिकोल पॉलीसेकेराइड का फॉर्म होना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हमारा जो प्रोटीन है वो मॉडिफाई होगा। सो एक्चुअली दिस हैपन इन 2 फेजेस। जो ये प्रोसेस है वो 2 फेजेस में होता है। फेज 1 विच ऑकर्ड आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो
एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के बाहर होता है. देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इट हैपन्स इन द inside the endoplasmic reticulum or in the lumen of the endoplasmic reticulum. So अगर हम फेज फर्स्ट की बात करेंगे, सो इन फेज फर्स्ट टू UDP and acetyl galactose residues are attached to the dolicol molecule embedded in the endoplasmic reticulum membrane. The sugar and dolicol form a pyrophosphate linkage. तो अगर हम नॉर्मली देखेंगे, ठीक है, अगर हम डायग्राम के बेसिस पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल दिस इज द एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे हमारा डोलिकोल प्रेजेंट है, ठीक है, डोलिकोल फॉस्फेट हैविंग वन फॉस्फेट, dolicol phosphate. So this lipid is already present in the endoplasmic reticulum, in the membrane of the endoplasmic reticulum. So first of all, 2 UDP glucose, we can see this reaction like this. UDP, and this is the N-acetyl galactose. Okay, so this gives us UMP, and I will rub this. Okay. So that you can understand easily. So this is our UDP and galactose amine. So this is gives us UMP, and this one phosphate and the N-acetyl glucose amine is added on this dolicol. Okay. Then second process is again the addition of one molecule of again this UDP and acetyl UDP sorry UDP and acetyl glucose amine. Before showing this reaction, I will show the simple structure of the glycan, how the glycan looks. Mannose, 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 mannose. So totally there are 9 mannose, mannose, mannose. Okay, I will have this diagram. You cannot drawn in this short space, small space. So mannose, 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 mannose,
mannose, mannose, mannose, glucose, 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 and glucose, N-acetyl glucosamine, and N-acetyl glucosamine, which is linked, which is attached to the dolicole with glycosidic bond, sorry, phosphoryl bond. So this is the general structure of the glycan, which which is going to add on the particular protein and mainly on the asparagine residue of the protein. Okay, see, this is the structure. So write down this structure and note down this structure, how this glycan look likes. So this glycan is now added on the asparagine residue of the protein. So I'm drawing the diagram. So I've already told that 2 UDP glucose and acetyl glucosamine are added. So this is the diagram. This is our dolicole with a single phosphate residue. So in the first process, the UDP and acetyl glucosamine is added to the dolicole by the formation of phosphate bond between the dolicole and the N-acetyl glucosamine. Okay, then the next reaction, UMP is released. The next reaction again, UDP and acetyl glucosamine is added. In this process, now UDP is released because we don't need the phosphate group for the bond formation. So two, sorry, I will draw the phosphate with black color so that you cannot confuse. So these are the two phosphate bonds, and here is our 2 N-acetyl glucosamine. So 2 N-acetyl glucosamine are attached to the dolicole molecule embedded in the AR membrane. The sugar and dolicole form a pyrophosphate linkage. Then next, 5 GDP mannose residues are attached to the galactosamine disaccharide. These steps are performed by glucosyl transferase. Okay. The next is now I'm writing here 5 UMP glucose GDP mannose. So I will draw mannose round structure. So these are mannose. This is our dolicole. Two phosphate bond attached with two mannose. Now two N-acetyl glucosamine. Now 5 mannose are added on this structure. 3, 4,
5. Okay, so this reaction is catalyzed by the enzyme that is glycosyl transferases. So this reaction is these both reactions are catalyzed by the enzyme glycosyl transferase. So we will got the dolicol galactosamine mannose residue. So we can write it there like this: dolicol N-acetyl glucosamine 2, because there are 2 N-acetyl glucosamine and 5 mannose. Okay. Then at this point the lipid linked glycan is translocated across the membrane, making it accessible to the enzyme in the endoplasmic reticulum. So now this dolicol will flip, and now this is the cytosol, and this is the lumen of endoplasmic reticulum. So the next reaction is the flipping of this dolicol to the inside of the endoplasmic reticulum, or lumen of the endoplasmic reticulum. If we draw the diagram here, so it is like that, like this. I will rub. This is the endoplasmic reticulum lumen, and the outside is the cytosol. Now this will flip, so you can see the whole dolicol along with the 2 acetyl N-acetyl glucosamine and 5 mannose residues flip inside the lumen of the endoplasmic reticulum. So this phenomena, how it flips, is poorly understood. Still work is going on, but it is considered or suggested that an enzyme known as flippase is responsible for the flipping of this dolicol lipid along with the along with the sugar residues inside the endoplasmic reticulum. So this is the first phase in which the 2 glucosamine residue and 5 mannose residues are added to the dolicol lipid, and now this dolicol lipid and this sugar molecules are now present inside in the endoplasmic reticulum lumen, so that the enzymes of the endoplasmic reticulum will act on this and further still or further add more sugar residues on that particular glycan molecule. Okay, so now our second phase starts. I will rub this. So now phase second will start. अब फेज सेकंड में क्या होता है, द ग्रोइंग ग्लाइकन इज एक्सपोज्ड ऑन द ल्यूमिनल साइट, हमने देखा, ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, एंड सब्सिक्वेंट शुगर्स दैट इज 4 मेनोज एंड 3 ग्लूकोज आर एडेड. सो हमने यहाँ पे देखा अभी लाइक डोलिकोल यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है. नाउ द रेजिड्यूज are present inside the inside the endoplasmic reticulum lumen,
Now in the luminal side, further four mannose and three glucose molecules are added to the this particular uh, undolicol polysaccharide residue, so that it will form our oligosaccharide. Okay. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and I will show the glucose with triangle and red color. So these three residues are the glucose residues. These nine residues are the mannose, and these two are the glucose amine and acetyl. Okay, 2, 9 and 3. So in this way the oligosaccharide is formed, or preformed carbohydrate chain is formed inside and outside of the endoplasmic reticulum. Then the next is, once the precursor oligosaccharide is formed, the complete glycan is then transferred to a nascent polypeptide in the lumen of endoplasmic reticulum membrane. So now this glycan, complete glycan is formed. Now this residue is transferred to a nascent protein, mainly the asparagine residue of that particular protein. So this reaction is driven by the energy released from the cleavage of the pyrophosphate bond between the dolicol and glycan molecule, and this reaction in which this particular protein, this particular oligosaccharide is transferred to a protein, is driven by the energy which is released when this bond between the phosphate of dolicol and glycan is break. So this energy facilitates the transfer of this particular glycan to the asparagine amino acid of the nascent protein. So before transfer, there is three condition which is very compulsory, or which is very important for the transfer of that particular glycan to the amino acid. So the amino acid or the protein should fulfill three conditions before a glycan is transferred to the nascent polypeptide. So first of all, the asparagine must be located in specific consensus sequence in the primary structure. So this asparagine should be in should be located in a particular consensus sequence in the primary structure. If the asparagine is present in that consensus sequence, then consensus sequence, which means that it is very conserved in all the different vertebrates or animals. Okay, so this is a very conserved sequence. So the asparagine should be located, or it must be located in that particular consensus sequence, and that consensus sequence is asparagine X serine, or asparagine X threonine, or in rare cases asparagine X cysteine. So this is the this should be the order of the amino acid, that is asparagine X. X could be any
amino acid except proline, could be any amino acid except प्रोलीन। तो प्रोलीन की जगह कोई भी अमीनो एसिड होगा तो ये जो ग्लाइकन है वो इस एस्पार्टेट पे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, एस्पार्जिन पे ट्रांसफ़र होगा। तो वैसे ही ये थ्रेओनीन भी, अगर थर्ड अमीनो एसिड थ्रेओनीन होगा या सीरीन होगा या सिस्टीन होगा तो चलेगा, बट जो ये सेंटर में अमीनो एसिड है वो कोई भी अमीनो एसिड होगा चलेगा, बट एक्सेप्ट प्रोलीन, प्रोलीन के अलावा जो भी अमीनो एसिड होगा चलेगा, बट प्रोलीन नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में जो थर्ड है या तो वो सीरीन होना चाहिए या थ्रीनिन होना चाहिए, सिस्टीन होना चाहिए। तो अगर इस कंडीशन में हमारा प्रोटीन हमको मिलेगा तो तभी ये जो ग्लाइकन है इट कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पार्जिन मॉलिक्यूल और ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। सो दिस इज द फर्स्ट condition that should be fulfilled by the protein so that the glycan can be transferred to the particular protein. The second is the aspargine must be located appropriately in the three-dimensional structure of the protein, that that is, the sugars are polar molecules and thus needed to be attached to the aspartate located on the surface of the protein and not buried within the protein. तो अगर प्रोटीन होगा तो जो हमारा एस्पार्टेट रेजिड्यू है इट शुड बी प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस and not should be present in the inner side or buried within the protein, because in the buried from the galactose cannot be transferred on the protein, because the sugars are all they themselves are polar in structure, they are polar molecules, so they cannot transferred on those aspargine which are present within the, or which are present buried in the uh, protein, within the protein. Okay, so the aspargine should be present on the surface so that the galactose or the this particular glycan can be transferred easily on the प्रोटीन। ओके, सो दिस इज द सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटीन है एस्पार्जिन हमारा अमीनो एसिड है वो प्रोटीन के अंदर नहीं होना चाहिए, जो मतलब वो बरीड नहीं होना चाहिए प्रोटीन के अंदर। जब वो फोल्डिंग हो, जब प्रोटीन का फोल्डिंग होगा तो वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए, वो बाहर होना चाहिए। जब बाहर प्रेजेंट होगा, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगा, तभी जो ये हमारा ग्लाइकन है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है, जिससे हमारा ग्लाइकोसाइलेशन होगा किसका, प्रोटीन का। उसके बाद तीसरा है एस्पार्जिन मस्ट बी फाउंड इन द लिमिनल साइट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टारगेट रेजिड्यूज और इधर फाउंड इन सेक्रेटरी प्रोटीन्स और इन द रीजन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन डेट फेजेस द ल्यूमन। तो जब इसका कोड ट्रांसलेशन हो रहा होता है, ठीक है, जो तीसरा कंडीशन क्या है, जब प्रोटीन का ट्रांसलेशन होगा तो कुछ पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा राइबोसोम है तो यहाँ पे एस्पार्जिन होगा, तो यहाँ पे ग्लाइकन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ग्लाइकन का ट्रांसफ़र कब होगा, तब जब ये एस्पार्जिन ल्यूमन में प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो प्रोटीन है, जो अमीनो, जो एंजाइम है जो ट्रांसफ़र करता है किसको, इस ग्लाइकन को, वो ल्यूमन में प्रेजेंट है। तो जो एस्पार्जिन है रेजिड्यू वो कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ल्यूमन में प्रेजेंट होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तभी ये ग्लाइकन वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर सम कंडीशंस थ्रू विच this glycan molecule is transferred to the protein. So oligosaccharyl transferase is the enzyme responsible for the recognition of the consensus sequence and transfer of the precursor glycan. तो जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगे तब एंजाइम है, दैट इज द oligosaccharyl transferase. So this enzyme recognize the consciousness sequence, that is, I've already told X serine, X threonine, and aspargine, X cysteine. So this is a very rare condition. So normally the oligosaccharyl transferase will detect these two consciousness sequences and causes the transfer of this particular glycan to a polypeptide acceptor which is being translated in the endoplasmic reticulum. तो यहाँ से वो ट्रांसफ़र होगा किसके पास, मेनली एस्पार्टेट के पास। तो हम ऐसा भी बना सकते हैं लाइक डायग्राम।
So this is a dolicol with 2-phosphate bond, and this is our main glucose amine attached with 9 mannose residues, 4 here, 5 6 5 6 7 8 9, and 3 glucose residues. And here is our protein. So now the oligosaccharide is transferred to the protein residue, which is still translated from the ribosome. Okay, so in this way the n-linked glycosylation of proteins are completed. So the enzyme which is responsible for this transfer is the oligosaccharyl transferase. Okay, so immediately after the oligosaccharide is transferred to the nascent polypeptide, all the 3 glucose residues and one particular mannose residues are removed from different enzyme. The 3 glucose residues, which are the last oligosaccharide, is complete and ready to transfer to a protein. Okay, the 3 glucose residues, which are the last oligosaccharide residue added in the synthesis of glucose, mannose, and galactosamine on the dolicol carrier, appear to act as a single signal that the oligosaccharide is complete and ready to be transferred to a protein. तो जब ये तीनों रेजिड्यूज वहाँ से हट जाएंगे, ठीक है, ग्लूकोज रेजिड्यू, तो तब उस अमीनो एसिड को, सॉरी, उस प्रोटीन को सिग्नल मिल जाता है कि नाउ द प्रोटीन इज रेडी टू ट्रांसफर टू गोल्जी एपरेटस और टू पर्टिकुलर टारगेट्स, ठीक है। तो जब यहाँ पे तीनों ग्लूकोज रेजिड्यूज वहाँ पे हट जाएंगे, तब अब वो सिग्नल देता है प्रोटीन को कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपको बाहर जाना है। सो इट एक्ट एज ए ट्रांसलोकेशन सिग्नल, ठीक है। तो जब तक ये 3 प्रेजेंट होंगे तब तक वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहेंगे। तो जब ये तीनों यहाँ से हट जाएंगे तब ये एक सिग्नल की तरह एक्ट करता है, एंड नाउ इट विल exit from the endoplasmic reticulum and transfer to its target positions or target areas. Okay, so 5 of its 14 residues are conserved in the structure of all N-linked oligosaccharide on secretory and membrane protein. Further modification of N-linked oligosaccharide occur in the Golgi complex. तो जो 5 रेजिड्यूज हैं, ठीक है, 14 में से, तो वो कंजर्व थे, जितने भी एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स हैं जो सेक्रेटरी या मेम्ब्रेन प्रोटीन पे प्रेजेंट है, बट उसके बाद उनका फर्दर मॉडिफिकेशन होता है कहाँ पे, इन द गोल्जी complex. So this is all about the N-linked glycosylation of protein. So इस glycosylation का क्या function है? So it has many function. तो जो पहला function है इसका, some proteins require N-linked polysaccharides, oligosaccharides in order to fold properly in the endoplasmic reticulum. तो यहाँ पे
ओलिगोसेकेराइड होना चाहिए, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स के लिए, क्योंकि जब ये प्रेजेंट होंगे तो उनका प्रॉपर वहाँ पे फोल्डिंग होगा। जैसे कि अभी हम प्रोटीन फोल्डिंग की बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो ओलिगोसेकेराइड है उसका फंक्शन वहाँ पे कहाँ पर है, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है ग्लाइकोसाइलेशन होना, ताकि वो प्रॉपरली फोल्ड कर सके, ठीक है। देन नेक्स्ट है एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड कन्फर स्टेबिलिटी ऑन मेनी सेक्रेटरी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। तो जो ये ग्लाइकोसाइलेशन है तो वो कुछ प्रोटीन्स को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, विच आर प्रेजेंट ऑन मेनी सिक्रेटेड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये प्रोटीएस रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड करता है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको, उस पर्टिकुलर प्रोटीन को। ये इसका दूसरा फंक्शन हुआ, एक तो प्रॉपर फोल्डिंग के लिए, दूसरा स्टेबिलिटी के लिए। तीसरा है ओलिगोसेकेराइड्स ऑन सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन प्ले एन इंपॉर्टेंट सेल रोल इन सेल एडिशन, ठीक है। सेल सेल एडिशन में इस ग्लाइकोप्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, तभी इस वजह से वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होता है। देन ओलिगोसेकेराइड्स प्रेजेंट ऑन ग्लाइकोप्रोटीन आल्सो सर्व एज एंटीजेंस। तो कुछ कुछ प्रोटीन्स में ये जो ग्लाइकोसेकेराइड्स है इट एक्ट एज एन एंटीजन, ठीक है, एक एंटीजन की तरह वो काम करता है। तो ये कुछ इसके रोल हैं, दैट इज प्रोटीन फोल्डिंग में है, स्टेबिलिटी में है, सेल सेल एडिशन में है, और एंटीजन एक्ट एज एन एंटीजन, ठीक है। तो इसमें ये ग्लाइकोसाइलेशन का इम्पोर्टेंट रोल है।